Okay, so today we will solve a question from TIFR 2025, which says that given S2 is a unit sphere on R3, and given a map F from S2 to S2 is an isometry, then F is what? F is surjective. Okay, we have to prove this. That is a true false section question, and the answer is true. Why it is true, we will see. It is a particular case of a more general statement which says that, okay, I will write the statement here. Let if, okay, let X be a compact matrix space, and if from X to X is a isometry, then F is surjective. Okay, it is clearly visible that this question is a particular case of this theorem, right? Here S2 is compact, right? And if S2 to S2 is isometry, then F is surjective. Okay, now why S2 is compact we will see later. First we will prove this theorem, this general theorem, that any compact any compact matrix space, if if S is an isometry, then F is surjective. Okay, now before that, recall what is an isometry, the definition of isometry. Let X be any matrix space, and if from X to X is said to be an isometry if it satisfies this distance of f of x comma f of y equals to distance of x comma y for all x comma y belongs to capital X. Okay, now from here it is clear that f is Lipschitz, right? From this condition it is clear that if f is an isometry from x to s, then f is Lipschitz function, right? That is, f is uniformly continuous and continuous already. Okay, now this is the definition of isometry. Now before proving this theorem, I want to prove a small proposition which we need to prove that theorem. Okay, the proposition says that if from x to x is an isometry, then what happens? Then f to the power n is also an isometry. Okay, where n belongs to natural number. That is, for any n belongs to natural number, if f is an isometry, then f to the power n is an isometry. Okay, we will prove this. Now, given we will prove that using induction method. Okay, first of all, let n equal to n. Then it is what? F to the power n is nothing but f to the power 1, that is f, right? That if is isometry is given, so base case is done. So inductive hypothesis is the statement holds for k belongs to natural number, where this is my induction hypothesis. Okay, now my inductive step is let not in let what we have to show, that uh, f to the power k plus 1 is an isometry, right? Then we are done. This is our claim. Okay, now distance of f to the power k plus 1 x comma f to the power k plus 1 y is what? We can write this like this, right? F of x comma f to the power k
f of y, right? Since f to the power k is an isometry by the induction hypothesis, so we can write it like this, that distance of f of xy, f of x comma f of y. Okay. Now given in the question they given that f is also an isometry, right? So it will be what? X comma y, where for all x comma y belongs to x, right? Then what we show? We showed that yeah, we showed that we take k for any k belongs to natural number where k is less than n, the statement holds, and we show that for k plus 1 is also holds. Then what is the conclusion? Then f to the power n is an isometry for all n belongs to natural number, right? So what we get, if is an isometry, then any power of f is also an isometry. Okay. Now one small lemma which we use, which we need here to prove the theorem that let A be any subset of a matrix space X, and uh, and let um, A is a subset of a matrix space X, then distance of A comma capital A equals to 0 if and only if A belongs to what? A belongs to A closure. Okay, right. Yes. You can prove this very easily using only definition of A closure. And what is the definition of this? What is mean? This means imprimum of distance of A comma X such that X belongs to capital A. Okay. All such distances and take the imprimum. Okay. Now we will proceed to prove the theorem. So now we have all the necessary tools to prove that theorem, that if X is compact and if is an isometry from X to X, then F is a surjection. Okay. Now I am writing the statement again, that X is a compact matrix space, and F from X to X is an isometry, then F is surjective. Okay. Now we will prove this. Okay. ओके, तो इसको प्रूफ कैसे करें? ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन से जाएंगे. कैसे? कि लेट ऑन द कॉन्ट्ररी assume that if is not surjective, राइट? ओके, तो if surjective नहीं है, इसका मतलब क्या है कि if of capital X is not equals to X, right? Okay, so we can have an element, there must exist an element from X minus f of X, right? That is f of X complement. You understand? Okay. So there exists E belongs to, there exists some element, say A belongs to X minus f of X, that is f of X whole complement. Okay. Okay, we can pick some element because f of X is not equals to X. Okay, so now what? Now इसके बाद कैसे प्रोसीड करें? तो मैं अभी एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करूंगा. वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ? विद द हेल्प ऑफ दिस ए. ओके, वो कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए. ओके, इस ओके, डिफाइन लेट्स से x नॉट इक्वल्स टू a and x1 is f of a, that is f of x naught, right? And x2 is f of x1, that is we can write this as okay, yes, so we can write this like that, right?
So x2 is what? F of x1, and x1 is what? F of a, right? So in place of x1 you can write f of a, so it is f square x0, right? Okay, now x3 is what? X3 is f of x2. I defined like this, so it will be f cube of x0, right? So proceeding similar manner, what will be xn? It will be x to the power n x f of xn minus 1, that is equals to f to the power n of x naught, राइट? ओके, तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे, तो हमें एक सीक्वेंस मिला, हमने कंस्ट्रक्ट किया एक सीक्वेंस. ओके, सो proceeding like this, we get a sequence xn inside x, right? Okay, inside x. Okay, now we use the property of the matrix space x, that is given that x is compact matrix space. Okay, and मैंने पहले ही कहा था कि अगर क्या बोलते हैं, एफ अगर आइसोमेट्री है तो वो ऑटोमेटिकली लिपचिस हो गया, राइट? बिकॉज हियर लिपचिस कांस्टेंट इज 1, राइट? ओके, सो और कोई भी फंक्शन अगर लिपचिस है तो वो बाय डेफिनेशन वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, राइट? और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी. ओके, तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस since here given that f is isometry. Okay, so f is continuous we have, and one more thing we have, that is x is compact, right? Since and from here what we can conclude, that f of x is also compact, since continuous image of a compact set is compact, right? So f of x compact है in x, right? और x क्या है? एक मैट्रिक्स स्पेस है. तो मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है? एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज हाउस ऑफ स्पेस, राइट? सो on a housed of space, every compact matrix space, in a housed of space, any compact subset of a housed of space is what is closed, right? So we can say f of x is closed in x. अगर ये हाउस ऑफ प्रॉपर्टी हमें ना मिलता तो हम ये चीज नहीं कह सकते थे कि कोई भी कॉम्पैक्ट सेट कोई भी कॉम्पैक्ट सेट इज नॉट नेसेसरली क्लोज्ड इन ए जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस. ओके, इसके लिए हमें हाउस ऑफ प्रॉपर्टी नेसेसरी है. वो हाउस ऑफ के बगैर वो हो भी सकता है, ना भी हो सकता है क्लोज्ड. ओके, ओके, since x is housed of. ओके, ओके, नाउ मैंने एक लेमा मेंशन किया था, राइट? वो लेमा क्या था कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा कैपिटल ए इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली व्हाट? इफ एंड ओनली if x belongs to a closure, right? Now we will use this lemma. Now we have a does not belongs to f of x, right? Because we take a from f of x complement. Okay, this implies what? From here what we can say, that f of distance of a comma this f of x is positive, right? So I take it delta greater than 0. Okay, you understand why I can write like this? You should understand. Okay, just use this lemma. Okay, now मेरा जो क्लेम होगा, now my claim is distance of xm. We have a sequence, right? Okay, so distance of xn comma xm is greater equal to delta for all n comma m belongs to natural number and m not equal to n. सारे m और n के लिए डिस्टेंस ऑफ xn comma xm is greater equal to delta where m is not equals to n. ओके, अगर हम ये क्लेम प्रूफ कर ले, मान लो कि ये प्रूफ हो गया, लेट इट इज प्रूव्ड. ओके, देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? अगर ये क्लेम प्रूव हो गया मेरा, तो अगर ये क्लेम प्रूव हो गया इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक सीक्वेंस था xn बिलोंग्स टू x एंड डिस्टेंस ऑफ xn, xm
is greater equal to delta for all m not equal to n, right? For all m not equal to n and m comma n belongs to natural number. Okay, then हम मैट्रिक्स सॉरी हम कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर काम कर रहे हैं ना. एक चीज है कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस. सो एनी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस बाय द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया. सिंस x is compact, so any sequence has a convergent subsequence, right? By sequential criteria of compactness, right? Okay, so in particular this sequence xn belongs to x must have a convergent subsequence, right? But it has no convergent subsequence because if we take any subsequence, say x in k of xn, then distance of x in I comma x in j is greater equal to delta for all I not equal to j. therefore their term इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी आई जे ले लो तुम किसी भी स्टेप के बाद, कितने भी स्टेप के बाद, तो वो दोनों टर्म एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हैं, वो हमेशा डेल्टा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या तो डेल्टा से ज्यादा या डेल्टा, राइट? ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो वो कोई भी सब सीक्वेंस तुम ले लो, वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकता, राइट? सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ना, बिकॉज एक्स इज कॉम्पैक्ट, सो एवरी सीक्वेंस मस्ट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? सो दिस इम्प्लाइज not implies, so this is a contradiction, right? Is a contradiction to the fact that x is compact. So our assumption is false. What was our assumption? That f of x has to be surjective, right? हमने मान लिया था कि f of x surjective नहीं है, तो इसके लिए यहाँ आके हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिला, राइट? सो f of x को सर्जेक्टिव होना ही पड़ेगा. तो हमारे पास बचा क्या क्या प्रूफ करना बचा है? सिर्फ ये क्लेम प्रूफ करना बचा है. अगर ये क्लेम प्रूफ कर दे हम, तो ये वाला चीज तो समझ आया, ये तो बहुत इजी है. क्लेम अगर एक बार प्रूफ कर दे तो ये चीज कॉन्ट्रडिक्शन में बहुत जल्दी, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ गया ये समझ आ रहा है ना. ठीक है, तो ये बाकी है, तो प्रूफ ऑफ द क्लेम. ओके ओके, तो केस 1, लेट m इक्वल्स टू 0. मैं फिक्स कर रहा हूँ m को, ठीक है, एंड n is greater equal to 1. okay, right? so we have, पहले से हमारे पास क्या क्या चीजें है मौजूद कि xn equals to x to the power n x naught, right? where x naught equals to a. okay, याद है ना, हमने ऐसे डिफाइन किया था सीक्वेंस को. ओके, फॉर ऑल n belongs to natural number. okay, now from here what we can write, xn equals to f of n to the power f to the power n minus 1 of x naught, right? we can write like this. तो ये एक एलिमेंट है कहाँ का, ये बिलोंग करता है x में, और इस एलिमेंट के ऊपर मैं f लगा रहा हूँ, और ये दे रहा है मुझे xn, तो ये कहाँ बिलोंग कर गया? कैपिटल f ऑफ x में ना, ये f ऑफ कैपिटल x में ना, ये इमेज में बिलोंग कर गया. समझ आ रहा है? ठीक है, दैट इज xn बिलोंग्स टू f ऑफ कैपिटल x. ओके, so xn belongs to f of capital X, and what we have, a does not belongs to f of x because we take a from f of x complement. okay, then distance of x naught comma xn is what? Distance of
a comma xn, because x0 is nothing but a. So distance of a comma xn, this is greater equal to what? This is greater equal to delta, right? Why? Since distance of a comma f of x equals to delta, which is greater than 0, right? कहाँ पर लिखा था मैंने? ओ, फ्रॉम हियर, राइट? हमने क्या दिखाया कि ये जो xn है, ये xn बिलोंग करता है कैपिटल f ऑफ x में। तो इस xn के साथ x0 का डिस्टेंस, मतलब इस xn के साथ a का डिस्टेंस, ये क्या डेल्टा, या डेल्टा से बड़ा ही होगा ना, छोटा तो नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? पूरे f ऑफ x के साथ ही उसका डिस्टेंस डेल्टा है। तो इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ इसका डिस्टेंस आइदर डेल्टा और ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा, राइट? ये तो ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा भी हम लिख सकते हैं, और इक्वल टू डेल्टा लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सेम ही था दो चीज। ओके, तो ये वाला केस डन हो गया। इस केस के लिए हमें पता चल गया। नाउ केस 2, दैट इज m not equal to n and m is greater equal to 1, n is greater equal to 1, right? और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि m is strictly less than small m is strictly less than small n. Okay, now what we did, किया क्या था पहले? ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एम कोमा एक्स एन, डिस्टेंस ऑफ f to the power m of x naught comma x to the power n of x naught, right? So from here, by the definition of the sequence, मैंने जैसे बनाया था ये सीक्वेंस, उस डेफिनेशन से मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली। सो और एक चीज, यहाँ पर m is strictly less than n है, right? So this n minus n is greater than 0. Okay, and one more thing, since ये दोनों ही नेचुरल नंबर है और m is n से strictly less than है, तो then from here we can write there exists a k belongs to natural number such that this n equals to this, right, ठीक है लिख रहा था, this n is equals to m plus k, right? Okay, we will use this. Now ये x to the power f of x naught whole to the power m, ओके हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ f to the power m x naught कॉमा इस n को हम क्या लिख सकते हैं, m plus k f to the power m plus k x naught, right? So distance of f to the power m x naught comma f to the power m of f to the power k of x naught, right? ये हम लिख सकते हैं। और हमें क्या पता है कि अगर f is an isometry, then every power of f is also an isometry. In particular, f to the power m is also an isometry, right? This implies distance of f to the power m of x naught comma f to the power m of f to the power k of x naught, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x naught comma f to the power k of x naught, right? ये हम लिख सकते हैं ना, because f to the power k is also an isometry. By the definition of isometry we can write like this. So this is equals to what, f to the power k of x naught क्या है, ये xk है ना, by the definition of the sequence, since f to the power k of x naught is nothing but xk. ओके, एंड ये x naught का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ a कॉमा xk, राइट? एंड ये xk कहाँ पे बिलोंग करता है, बोलो? ये xk कहाँ पे बिलोंग करता है? ये xk बिलोंग करता है, ये चीज xk इक्वल्स टू x टू द पावर k x naught। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ f ऑफ f टू द पावर k माइनस ऑफ x naught। तो ये कहाँ बिलोंग कर गया, f ऑफ कैपिटल x में बिलोंग कर गया ना, ये जो x naught है ये f ऑफ कैपिटल x में बिलोंग कर गया। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा ही होगा ना। समझ आ रहा है क्यों ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा हुआ? देन बाय केस 1 एंड केस 2, फ्रॉम केस 1 and case 2, what we can say,
for all m not equal to n, distance of xm comma xn is greater equal to delta, right? But delta is strictly greater 0. ओके, नाउ मैं फिर से वो चीज फिर से कह दे रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले बोला था, कॉन्ट्रडिक्शन क्या कैसे आया, क्या आया, ठीक है। तो नाउ लेट xn, not let, we have a sequence, we have this sequence xn belongs to x, and since x is compact, this implies xn has a convergent subsequence, right? By the sequential criteria of compactness. Okay, by the sequential criteria of compactness. This implies there exists a subsequence, say xn k of xn, which is convergent, right? This implies अब convergent है इसका मतलब क्या है? For every delta greater 0 there exists a natural number, say q belongs to natural number, distance of x in I comma x in j is less than delta for all I comma j, for all I comma j is greater equal to k. But this is a contradiction, right? Because distance of xm comma xn strictly is greater equal to delta for all m not equal to n. So कोई भी n के लिए इसका डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा हो रहा है। तो इन पर्टिकुलर ये जो सब सीक्वेंस लिया है इसका जो इंडेक्स है, इन सारे इंडेक्स के लिए भी इसका डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा ही होना चाहिए, पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये लेस देन डेल्टा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन ला रहा है एक्स इज कॉम्पैक्ट इसके ऊपर, बट दिस इंप्लाइज और assumption is false, right? Implies f of x is surjective. ओके, तो ये प्रूव हो गया। ओके, तो हमने प्रूफ क्या किया, कोई भी कॉम्पैक्ट सेट से उसी कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर अगर कोई आइसोमेट्री रहे तो वो आइसोमेट्री सर्जेक्टिव मैप हो जाएगा, एक ऑन टू मैप हो जाएगा। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ए फ्रॉम S2 to S2 is an isometry. Okay, then we have to show if this implies f is surjective. Okay, now if we show that S2 ये जो स्पीयर है, यूनिट स्पीयर in R3 is compact, then we are done, right? How we show that the S2 is compact? S2 is compact. Visually it is clear, right? S2 is compact, it is closed, it is bounded, so it is a subset of R3, so closed bounded imply compactness, right? So visually it is clear, right? So how we can prove this? Okay, so consider first I show that ओके ये बाउंडेड प्रूफ करना तो बहुत इजी है, इसे प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, बाउंडेड है S2, तो तुम इसके बारे में सोचना है S2 क्यों बाउंडेड है। ओके, एक चीज नोटिस करो कि S2 के अंदर हर एक एलिमेंट का नॉर्म 1 है ना, तो यहाँ से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो कि S2 बाउंडेड है या नहीं। तो ये एक्सरसाइज है कि S2 बाउंडेड है या नहीं चेक करो, मैं सिर्फ दिखाता हूँ S2 क्लोज्ड है। ओके, तो कॉन्सिडर ए फंक्शन g फ्रॉम से R3 to R by
g of x comma y comma z equals to say equals to x square plus y square plus z square. Is it continuous? Is this function g is continuous? Yes, because it is a polynomial in 3 variable, right? X comma y comma z, 3 variable. So any polynomial is continuous, right? So g is a continuous function. Okay. Now notice that singleton set 1 is closed in R, right? Any singleton set is closed. Now what is the pre-image under G of the singleton set? G inverse of singleton set 1. This is what? This is those x comma y comma z belongs to R3 such that G of x comma y comma z equals to 1, right? This implies those x comma y comma z belongs to R3 such that x square plus y square plus z square equals to 1, and this is nothing but S2, right? So therefore, since G is continuous and singleton 1 is a closed set in R, therefore inverse image of a closed set under continuous function is also closed, right? By definition of not definition, we can prove this using epsilon delta definition or open set definition. The inverse image of open set is open, right? Okay, the inverse image of closed set under a continuous function is also closed. Okay, some books use this as a definition also. Okay, not an issue. So inverse image of singleton set 1, we get it is S2. So S2 is closed, right? This implies S2 is closed. Now it is a homework that S2 is also bounded. Please check it. Okay. Then in Rn, any closed and bounded subset is directly, we can say that it is compact. It is if and only condition, right? Any compact set in Rn is closed and bounded, and any closed and bounded set in Rn is compact, right? So S2 is compact. So if is a isometry from S2 to S2, so by the previous theorem, we can say directly that F is surjective. Okay, thank you.